जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सब बहन भाई जितने भी इस टाइम हमें देख रहे हैं बाइबल टीवी पर, आपको हम वेलकम खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज का खूबसूरत दिन बख्श दिया ताकि आपके साथ मिलकर हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और उसके नाम की तमजीद कर सकें, क्योंकि वो हम के लायक है, वो तारीफ के लायक है, वो कादर मुतलक खुदा, वो हले मुश्किलात जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इस बात के लिए हम सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर हम खुदावंद के पाक बेटे यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सो यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें बार बार मौके देता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर सकें, कलाम की बात को शेयर कर सकें, बाइबल की बात को शेयर कर सकें और जलाल के बादशाह को जलाल दे सकें। आमीन, हालेलुया। सो इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहती हूँ कि आज हम आप हमारे साथ और भी खादम मौजूद हैं, हम उनको भी वेलकम करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। सो पास्टर सुहेल साहब हमारे साथ हैं। जी पास्टर सुहेल साहब, हम आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन को भी सलाम करें और इसके साथ इंट्रोड्यूस भी करवाएं। जी मसीह खुदावंद के जिंदगी बख्श नाम में तमाम नाजरीन को हम गुड इवनिंग कहते हैं और आप सबके लिए दुआ गो हैं। जितने लोग पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में हमें देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एशिया सैटेलाइट के ऊपर और दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी आप हमें देख रहे हैं, आप ट्विटर पर हमें देख रहे हैं, आप लिंक्डइन पर हमें देख रहे हैं और इसी तरह आप हमें इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। तो टुडे वी ब्यूटीफुल आवर गेस्ट एंड आई एम सो ग्लैड पास्टर रिचर्ड you be here and thanks God give me prayer replies and all glory to God, and we warmly welcome our studio and God more bless you. Please say some people watch it. We're so honored to be here. This is Pastor John with me. Pastor John has been with me in the ministry for 34 years. Amen. Here at our church in New Jersey. And so it is a real honor and a blessing for us to be able to be with you today. Amen. Amen. And same thing, Pastor John, and we real welcome, very warm welcome. I am so glad you here, and especially for blessing for the Bible TV. Thank you. Say the people. Amen. I appreciate that. That's a blessing to share God's grace and mercy. Amen. We're here to lift up the name of Jesus this morning to you guys. Amen. What an awesome time we're going to have in the Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. We give all glory to God because He is honorable, our God of God. Amen. Amen. Hallelujah. So हम खुदावन का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हमारा खुदावन जो है वो सब कुछ है और सब कुछ यकीनन खुदावन ये करने की कुदरत रखता है। और मैं समझती हूँ कि जितने भी बहन भाई देख रहे हैं इस वक्त, मेरे अजीजों, आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आए, लेट्स वी प्रे। Pastor John, Praise please Jesus. For prayer and then we start the program. Amen. Hallelujah. Father, we just thank you this morning. Hallelujah. We thank you for the grace. We thank you for the mercy, Lord. Lord. Yes, you are But most here, of all, my we just Lord. want to say, Lord, Thank we you, just Father. glorify your Thank you presence. for We your just Lord. glorify Thank your you for presence your this love, morning. for your Yes. kindness. Shekinah Thank you, glory Lord. shine Thank upon you, us Holy this morning. Spirit. Bless the speaker this morning, yes, Lord, Lord. and allow our Hallelujah. pastor, Words, Lord, my to bring Lord. forth that Glory word to in Jesus. Jesus' name, my Lord. Yes, Lord. Jesus. May the Father, we know it's not by might, it's not by power, Thank but you, it's Lord. by your Thank you, Spirit, Father. said the Thank Lord. you. Yes, Now, Lord. Holy Spirit, Oh, now you yes. speak In whatever Jesus' you want to name, speak my to us, Lord. Oh, because yes. we are your willing Sakaraba. vessels this morning, Lord, Yes. that you have called upon Yes, Lord. in these Yes, last Father. hours, Lord. We want to Oh, shine glory to a Lord. glory upon you Yes. this morning, Lord. Yes, because Lord. Thank of you your for your name, love. Jesus. Thank you for Father, we goodness. know that you are the Praise. Alpha and the Thank you, Omega, Lord. Lord. Thank you, Holy Father, we know that you are the Oh, first and yes, last. Lord. We shall not have no other Hallelujah. gods before you, Lord.
And Father, Oh, we yes, honor you Lord. this morning. Yes, And we Jesus. give you all the glory and all the praise. Yes. Oh, yes. And all God's people say. Yes. Amen. Amen. Praise Jesus. यकीनन खुदा के खादम पास्टर जॉन ने प्रेयर की है और कलाम में भी लिखा हुआ है कि काम या कलाम जो कुछ करते हो करो। सो मेरे अजीजों, जब हम दुआ की वसीला से जिस काम का आगाज करते हैं, हम अपने काम का, अपने दिन का, अपने जॉब का, मेरे अजीजों दुआ की वसीला से काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमें उस काम में क्या करता है, बरकत देता है। क्योंकि जब हम प्रायोरिटी खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद भी फिर हमें पहले दर्जे पर रखता है। आमीन। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। जैसा आपने कहा कि जब हम पहला ऑनर खुदा को देते हैं तो खुदा भी हमें ऑनर देता है। I'm just saying the people, you first give it to honor for our Jesus Christ, and God, Jesus is giving to your honor. Nobody give to your honor. Nobody give it to honor, no worry about it. But you give it to honor for the Jesus, and Jesus is given to honor. तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को ज्यादा से ज्यादा ऑनर दें। अगर आप लेट डाउन हो चुके हैं, आप कभी मत घबराएं कि आप लेट डाउन हैं। आपको कोई चीज लेट डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अप डाउन जो है वो खुदावंद यीशु करता है। अप लिफ्ट आपको खुदावंद करता है। I'm just saying the people, you let down, no worry about, but uplift God with you, right? Amen. And God with you and you success. God with you and you prosper. God with you and you're more and more blessing receiving. Always in Jesus' name, right? Amen. Amen. तो हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। मेरे अजीजों, आज हम बात भी करेंगे क्योंकि कोविड की वजह से पाकिस्तान में, इंडिया और बांग्लादेश, इसी तरह यूके और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम दुआ भी करेंगे। खुदा के खादम पास्टर रिचर्ड, स्पेशल प्रेयर फॉर कोविड पीपल्स, एंड राइट नाउ पीपल विल सिक, and please pray right now. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Lord. Oh, thank you. Yes, Glory, Lord. Yes, Lord. Jesus. I give it Yes. in your hands, my Lord, for Hallelujah. all Hallelujah. covered people I in the just United believe States. that the Holy Spirit Yes. is saying right now Yes, that Lord. not only are there sick people Yes. that are watching us today, Yes. but there are people who are discouraged Yes. and are Yes. depressed, Yes. you know, and they've been trying to serve their God, and their God hasn't given them anything. Yes. He has stolen from them. Yes. He has Hallelujah. taken from them Glory to instead of giving them. Yes. And Yes. today we are offering you a Yes. God Yes. by the name of Jesus. Oh, Yes, Lord. Yes. That will not Hallelujah. only heal your Oh, body, yes, but Lord. He will take In away. Jesus' See, name. they Yes, are Lord. foul spirits. Yes. That- Oh, that yes, depression Lord. is a foul Glory. spirit. Yes, We Lord. break the Repeat, hold repeat. of the aggressive spirit over Oh, you. Sakarababio Rokobio. We bind up that Yes, power. in Jesus' name. We render it Yes, powerless Lord. in Jesus' name. Yes, Lord, in We cause Jesus' that name. which is causing Remove and all anxiety, sickness. and fear, Yes, and yes. worry. In We Jesus' render that name. powerless Yes, now. glory, In the glory, name of glory. Jesus. Yes, And Lord. we release peace. Yes, We Lord. Give me release peace. joy. Yes, Lord. We Give me release joy. hope upon you. Yes, Lord. Because the Hallelujah. God that we serve Hallelujah. is life. Hallelujah. Is life. Yes, And Lord. not death. Hallelujah. Yes. So I Oh, release healing into hallelujah. your body. Yes. I release hope Glory into to your God. mind. Yes. And all those lies that have been Glory, trying to glory, keep in glory, your thoughts glory, are broken glory, now. glory. In the name Of of Jesus. And I Amen. break that Amen. hold Yes, over you yes. now. Amen. By the authority, Yes, the Lord. blood, Yes. and the name Jesus' name. of Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. All glory to the Lord. All glory to God. Amen. Give it to honor, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. यकीनन मेरे अजीजों, खुदावन के खादम ने दुआ की है और दुआ के अंदर पावर है, पावर ऑफ प्रेयर्स।
क्योंकि दुआ के अंदर इतनी कुव्वत है कि Yes. जब हम वर्ड्स मुंह से निकालते हैं तो यकीनन खुदा आमीन। सो मेरे अजीजों, आप जितने भी देख रहे हैं, अगेन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें और इसी के साथ बाइबल टीवी के ऊपर जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर कोई भी आपकी नीड है, जरूरत है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। अगर कोई आप दुआ करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस, कि आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हम आपकी कॉल लेंगे। और इसी तरह खुदा उनके खादम प्रॉफिट जॉन हमारे साथ मौजूद है। ये हो सकता है खुदा का रूह इनको कायल करे और वो आपके लिए प्रॉफसी कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, कोई परेशानी है, टेंशन है, आप जरूर अपनी परेशानी को शेयर करें ताकि खुदा उनके खादम आज आपके लिए दुआ करें। Amen. Hallelujah. ऐसा आपने कहा कि प्लीज आप हमें वीडियो कॉल ना कीजिएगा। डोंट कॉल एनी वीडियो कॉल, जस्ट डोंट कॉल एनी वीडियो कॉल, जस्ट रेगुलर कॉल्स। और जरूर पास्टर जॉन जो है वो प्रॉफिट है, आपके लिए प्रॉक्सी करेंगे। आपकी जिंदगी में आने वाली जो भी बातें हैं वो आपको बता सकते हैं। खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदावंद अपने खादम को, पास्टर रिचर्ड को, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पास्टर रिचर्ड, गॉड यूज्ड यू एंड योर मिनिस्ट्री एंड आई गिव इट टू ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं इस बात के लिए भी। और जितने लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम आप सबको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और आप सब के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। और स्क्रीन पर आप हमारा नंबर चलता देख रहे हैं, यू कॉल अस, और हमारा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यू जस्ट सेंड मी द प्रेयर रिक्वेस्ट, आप हमारे ईमेल्स करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि जब दुआ करेंगे तो बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और खुदावंद आपको रिलीज करेगा। हालेलुया। Can you take some name of the people? Yes, who are sending us prayer some requests? people's, I think so. Praise Jesus. I saw Hallelujah. Esther put her glasses on. Now I have to put mine on. Pastor John, you see the Yes. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. yes. Praise God. Yes. Hallelujah. We welcome Sister Elizabeth. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी मदद करे। Praise और हम Jesus. आपको वेलकम करते हैं सिस्टर रूथ, वी वेलकम। और हम आपको भी वेलकम करते हैं बाइबल टीवी पर। आपके लिए भी हम दुआ गो हैं, खुदावंद आपको बढ़ाए, ब्रोमंद करे। विकी है, हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपके लिए भी बरकत चाहते हैं। रुबेका स्टीफन, हम आपके लिए भी रुबेका स्टीफन दुआ करेंगे। खुदावंद आपके भी दिल की मुरादों को पूरा करे और खुदावंद आपको भी बरकत पर बरकत दे। हालेलुया। Amen. Hallelujah. जी एस्टर। Praise the Lord. Sister Rebecca Stephen is with us. Sister Rebecca Stephen, आप लिखती हैं प्रेज हालेलुया। यकीनन ऑल ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि वही इस लायक है कि उसे की जाए। मेरे अजीजों, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें ताकि खुदावंद के खादम आपके लिए दुआ कर सकें। और इसी तरह सिस्टर रूथ रोज लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सिस्टर रूथ रोज, खुदावंद आपके भी साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। और इसी तरह खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सिस्टर एस्टर evangelist Esther Jacob also with us. खुदावंद की खादमा एस्टर जेकब, हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। आप खुदावंद की खिदमत कर रही हैं और खुदावंद के जलाल के लिए खुदावंद आपको और बढ़ाए। ब्रदर विक्की वसी लिखते हैं आमेन हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और इसी तरह ब्रदर अजाज मसीह सोत्रा हमारे साथ है। जी ब्रदर अजाज मसीह सोत्रा, वी वेलकम यू ऑन बाइबल टीवी। और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, खुदावंद आपको बड़ी ब्लेसिंग दे, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग। वी क्लेम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे साथ जमाल मोहम्मद अली उस्मान is Muslim and he trying to request for the prayer request. So जरूर हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। ब्रदर जमाल
मोहम्मद अली, और खुदावंद आपको बरकत दे। आपके लिए हम जरूर दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को, और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करे। जी, Praise Jesus, hallelujah. Brother Anwar Bhatti is watching us and he write, pray for me and my family. Definitely brother Anwar, we will pray for you and your family. हम आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए definitely दुआ करेंगे और आप यीशु मसीह के नाम की गवाही शेयर करेंगे। Praise Jesus, hallelujah. और इसी तरह सिस्टर Ruth Rose. Yes. She's watching us. Yes. She's been praying for a breakthrough, and God wants her to know that God wants her to know that breakthrough is coming right now, and that God is going to take away the abuse that she's been experiencing, and that God is going to begin to use her because she has dedicated her heart to God. So get ready, Ruth Rose. Amen, amen. Praise the Lord. And also Rebecca marriage. I've been through that situation, amen. Through that situation, amen. But you got to trust the Lord like you have never trusted Him before. Praise and I just Jesus. know that God said He'll come in and fix anything that we have need to be fixed up, and especially husbands and wives for such a time as this, honey. I just know you got to stand on nothing less but Jesus' righteousness. Amen? Because He is in the healing business. He do bring back husbands and wives as one in the body of Christ Jesus. Amen? Praise, hallelujah, hallelujah. Amen. So, you have any prayer requests more? Sister Nigat Aslam is with us and she is saying, please pray for me and my family, my son and Paul study. So definitely Sister Nigat, we will pray for you. कल से खुदा उनके नाम की आप गवाही देंगी और खुदा उनका पाक रूह आपकी बड़ी मदद करें और आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। और जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, खुदा उनका फजल वाला हाथ आप सबको बरकत दें और खुदा उनका पाक रूह आपकी रहनुमाई करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हेलो हेलो जी सिस्टर साइमा, हम इस वक्त बाइबल टीवी पर हैं और आपकी कॉल आ रही है। सो हम खुदा के कदम पास्टर रिचर्ड हमारे साथ है, पास्टर जॉन हमारे साथ है। सो राइट नो आपको पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप दुआ करवाना चाहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बात करवा दें। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच, आपको भी। हाँ जी, थैंक यू। और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए स्पेशली मतलब प्रेयर्स करने मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है अभी हाल ही में। ऑलराइट। और मैं बहुत सारी क्राइसिस से मतलब गुजरी हूँ, खुदावन का फजल भी हूँ, खुदावन का फजल है कि खुदावन ने मुझे उठाया है मतलब। Amen. So Sister Saima, would you like to pray Pastor Richard for you? Yes. Okay. If you want, you explain something in English, please. She is Sister Saima. She is living in Pennsylvania, Philadelphia, and she is suffering many problems. So please, Pastor, you pray for her. Physical problem? Yes, physical problem. And her first name is Saima. Simon? And his last name is Aaron. Okay, Simon. Father, I thank you right now. Praise Jesus. You're holding your phone, and I'm holding this phone. Yes. And that's our point of contact. Yes. Now God is your healer. Yes, So Jesus. I release the healing Hallelujah. virtue Jesus. in the name of Jesus. Praise. Oh, yes. Now, I want to explain something to you. Listen to me carefully. When the woman touched the hem of his garment, Come on. he said, somebody yes. touched Come on. me. Yes. And he said, Oh, yes, Lord. and Thank his you, disciples Father. said, Glory so to many God. have touched Yes, it. Lord. But Yes. he said, I have felt virtue. Yes. leave Hallelujah. her." Yes. Hallelujah. And that word virtue there means the life substance of his being. Yes. So what left him was health and healing and life.
because Yes. the life substance of his being left him. And when we pray today in Oh, yes. Jesus' name, Yes, that Amen. same virtue Yes. that touched that Praise, woman praise. is now Hallelujah. touching you in the name of Jesus. Yes, so Lord. I release that Yes, virtue, Jesus. and Hallelujah. all the Lord. disease Yes, in Lord. your Hallelujah. body Thank you, Lord. must Thank die, you, because the Praise. life Yes, virtue Lord. of Yes, Jesus Father. just Hallelujah. entered you. Yes. And I thank you for it, Father. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Yes. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Simon. We talk with you later. So I receiving one more call, Elizabeth Jacob. Can you close your? Okay. One calling is dropped. So, Pastor, people are watching you and taking many blessing. How come you Christ in which age? How come? I'm not sure what you want to know. I'm not sure what you want to know. We accept Jesus Christ. What Jesus age? Christ. Oh, what age? Yeah. I accepted Jesus Christ as a small child. Yeah. Amen. But as a teenager, Right. I walked away. Praise. And then I came back in 1976. Yes, hold Wow. करें And I've absolutely. been serving him ever since then. 1976. 76. See, that's why we like each other. Yes, like it. You born in Christ and he is born physically. Yes, yes. You're the same age my daughter. Amen. Amen. So Sister Elizabeth Jacob is with us from Okay. Pakistan. Okay. She want to talk with you, Pastor John. Yes. Yes, Sister Elizabeth. Yes, ma'am. Yes, I'm here. I think it's more people calls. Yeah. I am suffering from many years in headache. So I want to pray for my headache and all my body pain. She feel too much from many years. She is headache and also suffering many other problems. Headache is the most important. I'm praying for the headache. Yeah, You man. pray Because for he, the- Okay. he got that headache. Yes. Right. God, listen to me carefully, Elizabeth. God has used me. This is Pastor Myers, Pastor Richard. This headaches, everybody I pray for headaches, Got healed. get healed. Amen. 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 It's just an anointing that Yes. God has given Amen. to me to use. So in the name of Jesus, I command the headaches to Yes. stop. Yes, Lord. Yes. Oh, And as yes. I put my hand on this phone, Yes, and Lord. I remove my hand In from Praise. this Jesus' phone, name, that yes. headache All is headache leaving is you, gone. and Yes, you will in not have Jesus' headaches name. again Praise. in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Elizabeth, did you have a headache when you called? You asked me. Hello? वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने कॉल की आप पेन हो रही थी? हाँ, बोलिए। यस. Does she have it now? वो पूछ रहे हैं कि अभी आपके सर में पेन है? अभी बस नहीं ज़्यादा नहीं। She's saying when No I more. no more pain. No more pain. Yes, So- little bit she Amen. feel pain, but not too much. Okay, so she had it when she called. Yes. She had it when she called, Yes, but she does not have it now. right. Yes, she feel better. Good. Yeah, Okay. with your prayers. It'll go away. So God bless you, sister. God bless you. Okay. So many people are calling us, लेकिन हम सबकी कॉल इस वक्त नहीं ले सकते. हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं. आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें. हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स लें, लेकिन आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुदावंद के कलाम की बातों को सुन सकें और शेयर कर सकें. हालेलुया. सो यीशु का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए. Khan and Khan. ओके. He watching us and in area. Praise Jesus. Hallelujah. Is there a Rebecca watching? Yes, Rebecca still watching. Rebecca's watching? Yes. Tell her God has heard your prayer and He is answering it now. It will take 2 to 3 months for it to manifest,
but God has heard. Stop worrying. Stop being fearful. God has heard your prayer. Praise the Lord. Amen. रोबेका Amen. खुदा से खुदा ने कलाम किया है और Amen. उन्होंने कहा है कि आपने परेशान नहीं होना क्योंकि खुदा ने आपकी दुआओं को सुन लिया है और खुदावंद के फजल से आप गवाही देंगे. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Amen. Yes, we explain. So one caller is with us. Her name is Ruth. So she. You just Hello? see the what with the Rose, Ruth Rose, she's calling now. left hand pain. Left hand pain. She have pain in left hand. So how Only for 4 months. before 4 months, 4 months. she is suffering in left hand pain. Okay. Does she have it now? आपके वो कह रहे हैं कि अभी भी हाथ के अंदर है पेन. Yes. Yes, I have pain. Okay, close your fist if you can. अपने हाथ को जो है वो कह रहे हैं कि ऐसे बंद करें मुट्ठी को. Okay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I Yes. release healing. और यीशु के नाम में हम हाथ की सारी दर्द को कैंसिल कर देते हैं. यीशु के नाम से मेरे खुदा वो अपना हाथ बढ़ाकर अभी इसी घड़ी खुदावंद अपने कुदरत को जाहिर कर, अपना जलाल जाहिर कर, ताकि तेरी बंदी शिफा पाए और तेरी गवाही दे. In Jesus name. Yes, Lord. In Jesus name. Ruth, I want you to open one finger at a time. Yes. वो कह रहे हैं कि अपनी फिंगर को खोलो Yes. one by one. Is the pain gone? वो Amen. पूछ रहे हैं कि पेन चली गई है. Amen. हेलो. Yes. Yes? Yes. Yes. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah to Tell God. her she's healed now. वो कह रहे No हैं more कि problems. no more Yes. problems. खुदा ने आपको शिफा दी है. Okay, God bless you. तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं. यकीनन वो शिफा का मंबा और कलाम में लिखा है कि वो Yes. अपना ही कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्श देता है. हम Amen. यीशु का शुक्र अदा करते हैं इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए. सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आए अपने सरों को झुकाएं और हम कलाम को सुनेंगे. लेकिन कलाम को सुनने से पहले हम मेरे अजीजों सिर्फ 2 वर्सेस गाएंगे हालेलुया के कोर्स की, और उसके बाद हम खुदा के कलाम खादम से खुदा का कलाम सुनेंगे. सो we close our eyes, we sing hallelujah 2 verses, and after the these verses we listen the word of God. Okay. Now everybody ready for the word Yes. of Okay. Praise Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you Praise for wonderful faithfulness, my Lord. Lord. Thank you. Oh, Rabara Sundara Sitara Karaba Baba 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 Baba. Jesus. Oh, yes. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, yes, Lord. Pastor John, please pray for Oh, bless your name, the Lord. word of God. Father, we just thank you right Lord, now, we Lord. say you Yes, welcome. Lord. As the word is Holy coming Spirit, forth like we a say two-edged welcome. sword, Lord. Yes, Father, we Jesus. pray right now that Oh, those that have Jesus. ears to hear what Yes, thus says the Jesus. Lord this hour, Open Lord. our ears. Father, we We thank you want for to that listen anointing, your Lord, word, that will Lord. break all the yokes of bondage, Lord. Hallelujah. As that Touch word is heart, truly my brought Lord. Thank forth. you, Yes, Father. In the Jesus. name of Yes, Jesus Lord. Christ of Yes, Nazareth. Lord. Praise Yes, Not by Father. might, it's not by Yes, power, Lord. Yes, but it's Father. by your Spirit, Hallelujah. said the Lord. Hallelujah. Now, Lord, you bless your man servant right now, Lord, Yes, and allow him to Yes. speak, Lord. This is Yes, your Jesus. time, Your my Lord. people, Lord, Yes, will my humble Oh, themselves yes, Lord. and seek your face after I this am word, ready, Lord. my Lord. I am And Lord, sitting Father, we your ask all words, these my Lord. anointed Hallelujah. blessings Oh, that are about to glory come to forth. Lord. In your name we pray. Amen. 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 We say welcome to Holy Spirit and Word of God, Yes. Pastor Richard. With, Amen. with big hands. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Praise Hallelujah. Jesus. I want to talk to you today about what just happened. It happened 2,000 years ago, but we Jesus. celebrated Praise it you. just a couple weeks ago. Praise And you. so I want to read to you from the book of Luke, the 23rd chapter. In the book of Luke, on the 23rd chapter, Jesus had been put on the cross, and there he's hanging on the cross, and next to him are two malefactors, and what we call thieves, what we call robbers, whatever. Right. And on this cross with Jesus on either side of him, Hallelujah. the two of them are there hanging with him, and the one of them is talking to Jesus and say, "Save us, save yourself." Right. Extremely self-centered. He didn't care if Jesus saved himself. He wanted to be saved and removed off the cross. And then we read there in the 43rd verse of this chapter, we read these words. And Jesus said, actually, let me read first in the 42nd chapter, in the 42nd verse, he says, "And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Yes. Amen. And Jesus saith unto him, "Verily I say unto you, today Yes. you shall be with me in paradise." Amen. You know, before Jesus ever made it to the cross, he had a whole ministry of about 3 years. During the early part of his ministry, as he was walking by the River Jordan, God sent him there while John the Baptist was baptizing people. And when John looked up and saw Jesus, he said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Yes. John declared that Jesus was the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Amen. The Bible calls Jesus the first fruits of the Father. Yes. The first fruits of the firstborn. Yes. In other words, he became the very first one that provided for us the way unto God through the salvation from sin to sainthood, Yes. and from being alienated with God Yes. and being brought into a relationship with God. Jesus. Now, here's some interesting things that make this so real for you and I today. Praise. Yes. In the Jewish tradition, every day it was the assignment of the priest to sacrifice a morning sacrifice Yes. and an evening sacrifice. Yes. They would offer up a morning lamb, and this lamb had to come from a certain region of Israel, and it had to be without spot
or blemish or wrinkle or Yes. anything else. Yes. It had to be Yes. a pure lamb. Right. It was brought to the temple on the 10th day of Nisan for the Passover celebration. Right. The first morning sacrifice that was made would be the morning offering by the priest on the third hour of the day. The third hour of the day was the time that Yes. Jesus was placed on the cross. Yes. Yes, Amen. yes. Yes. Now, John said he was the Lamb of God, and the morning sacrifice required a lamb's blood to be shed. And so now Jesus is placed on the cross at approximately 9 o'clock in the morning. Right. Now, during the normal sacrifice of the lambs, when the morning worship was made, when the morning lamb was sacrificed, a trumpet would blow, Jesus. and the temple doors would open up, Yes. and people could go into the temple and there worship God. Oh, yes. Amen. Oh, yes. That's why the veil in the temple had to be split Yes. when Yes. Jesus was sacrificed, Yes. so that it Yes. made a way for every one of us to Praise, come into praise, the presence praise, and the hallelujah. revelation of relationship Yes. is now Amen. available to us. Hallelujah. Hallelujah. The temple was now open for the people to worship God. Yes. Amen. Jesus is now the temple that opens the way for you and I to worship Jesus. God. Amen. Amen. The second sacrifice of the day was made in the later part of the day. It was called the evening sacrifice. And it Yes. was roughly around 3 o'clock in the afternoon. Yes. This is the exact time that Jesus gave up the ghost and died. Come on. Yes. Come He on. became the afternoon and the evening sacrifice Yes. for you Yes. and for us. Yes. Praise. You know, I often wondered why these priests were so obsessed with killing Jesus. Jesus. And I began to research this and look, and I found out this, that it was the calling of God upon the priests. Come on. Listen to me carefully. It was the Right. calling and the assignment Jesus. that the priest would sacrifice the sacrificial lamb every morning and afternoon. Jesus. Yes. They had to crucify Jesus Amen. the moment that John said, as he walked by the Jordan, behold the Lamb of God. Yes. Praise. Yes. Hallelujah. They had no choice. It was their calling. It was their responsibility. They had to. They had nothing else that they could do, but they were to offer up those two sacrifices every day. Jesus. Now, coming to Passover time. Right. At Passover time, the lamb that would be sacrificed on that day would come on the 10th day of Nisan. Yes. They would be bringing this lamb into the city, into Jerusalem, in preparation for slaughter, killing, shedding its blood Jesus. for the sacrifice of the sins of the nation Amen. of Israel. Yes. Amen. It was done on the 10th day of Israel, Yes. of Nisan, the celebration of Nisan. You know what that day is for us? Jesus. That's the day of Palm Sunday. Yes. Oh, yes. Come on. So Amen. Jesus was brought into the Come on. city Right. as the sacrificial lamb on the very day that that lamb was supposed to be brought into the city to be Jesus. sacrificed Amen. for the Yes. sins Yes. of the nation. Amen. Oh, yes. Amen. See, he Amen. began fulfilling everything that God said he would do. And see, only they, the high priest, could deliver that lamb on that day of Pentecost. Amen. On that day of Passover. Yes. And so now we have the lamb who has been brought in on Palm Sunday. He is brought before all the people, and everything is now set in place for God to complete the plan of salvation. Praise. Amen. Praise. Amen. Hallelujah. He has fulfilled all the requirements. Yes. Amen. Everything that Amen. God
had to have in place. Yeah. Praise Yes. Jesus. In fact, in 1 Peter it says that lamb had to be sacrificed, blood had to be shed, Jesus. and that lamb had to be without spot, Yes. wrinkle, or blemish. Yes. Yes. In 1 Peter, the first chapter, the 18th and 19th verses say this, and I'm just going to read you the 19th verse. But with the precious blood of Jesus, with the precious blood of Christ, Amen. as of a Oh, lamb, yes. without Jesus. blemish Amen. and Oh, without yes. spot. Yes. So he Yes. wound up being the very sacrificial Lamb of God that these priests had to Yes. sacrifice. Yes. Praise. Yes. Now, there's something else really important about this that you need to understand. Every one of those lambs that were sacrificed in the morning and in the afternoon came from a specific region of Israel. They were Yes. bred and they Yes. were, they were grown up and they were separated by the shepherds out in the field, and they would take the firstborn, because with God, the first male born Come on. is dedicated Yes. back to him. Yes. Jesus. So they would take the first male born little lamb, and they would take it if it was without spot or wrinkle, without blemishes, and that would be set aside, and they would cultivate it and nourish it so it would be ready for the sacrifice of Right. the high priest. Yes. Praise. Those lambs had to come from Bethlehem. Yes. Oh, yes. 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 Now, do you see why Jesus had to be born in Bethlehem? Jesus. He had to fulfill the requirements of the priesthood, that the lamb sacrifice must be born in Bethlehem and brought from Bethlehem into Jerusalem, which is exactly what happened to Jesus. Amen. Amen. And so the Amen. most amazing thing about this is that Uh-huh. God caused a census to be taken so that he had to go with his mother and father, Mary and Joseph, up to Jerusalem, and he wound up in Bethlehem, and he was born there, the firstborn of God, without spot or wrinkle. Amen. Praise. Amen. Praise. Amen. One other thing about that that's really important for us to understand. Remember when Jesus was born? We're now in his death, but do you remember when he was born? Who are the very first ones that received the knowledge that Christ was born in Bethlehem? The shepherds. The very shepherds Yes. who raised the sacrificial lambs. So Wow. what happens is they are the only ones who would understand that Wow. Jesus Christ was born to be sacrificed. Amen. 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 That's good. That's good, isn't it? Amen. And so what Amen. happens there is that he is born in Bethlehem. When he's born, the angel appears to the shepherds first, the very ones that raised the lambs. Amen. And Yes. they were the only ones in the entire world who could understand Jesus. that It's Jesus big revelation. was Yes. born to be sacrificed. Yes. Yes. And so we find him on the cross. The one malefactor is ridiculing him. The other one says to him there in Luke, where we're reading in the 41st verse, dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? Yes. And we indeed justly, for we receive our due reward of our deeds. Jesus. But, now listen to this, but this man has done nothing wrong. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Praise. Amen. You know what God just declared through Yes. the man that was hanging on the cross? He declared that this sacrificial lamb, my son, is without blemish and without spot. Hallelujah. Praise. Hallelujah. For he was tempted in all ways as we are, but yet without Jesus. sin. Now here's the good part. This same one hanging on the cross for the deeds that he committed, for the sins that he had, for all the things that put him on that cross, he turns to Jesus and he Praise. says this. Praise. He says,
Lord, remember me Come on. when thou comest Yes. Come on. into Kingdom. thy Kingdom. kingdom. Amen. Oh, Jesus. man. You know Amen. what he was saying there? Yeah. He was saying, I see you. Amen. You are the Son of God. Praise. Amen. You are the Son Praise. of God. Amen. You Amen. are without Yes. spot or Amen. wrinkle. Yes. And I know Glory to Lord. today Yes. that you are the Yes. first Lord. fruits Oh, of yes. God the Hallelujah. Father. Oh, hallelujah. Now Hallelujah. watch, this is so cool. Yes, Lord. Jesus becomes the first You are fruit awesome, of Lord. God. Amen. Yes. And this thief hanging on the cross Mm. becomes the first fruit of Jesus. Amen. Yes. Amen. Praise Jesus. All the rest had to die, and then they would come into the kingdom of God. But this thief Come on. on that Yes. day would wind up in paradise, in God's kingdom Yes. with him. Jesus. The Amen. thief Yes. on the cross who was crucified with Jesus said, remember me Yes. when you come into your kingdom. You Amen. know what? Wherever you are right now, Come on. whatever you're going through right now, Jesus. Praise whatever Jesus. struggles you're having, Praise Jesus. whatever God you're serving other than the God through Jesus Christ, Yes. Yes. you too can turn to God today and you can say, remember me, Jesus. Yes. for you are in your kingdom. Amen. 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 And what you Amen. would be saying there is, I believe Yes. you are the Son of God. Praise. Jesus. And if Yes. you're the Son of God, and I believe it, then Hallelujah. I ask you to forgive me of my sins and bring me into the kingdom of God Praise. here on earth for the rest of my life. Yes. And then when I leave this world, I will be with you in paradise forever. Amen. 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 Hallelujah. So Amen. if you're there right now, Jesus. right this very moment, and you've never asked Jesus Christ to be your Lord Yes. and your Savior Yes. and forgive you of your Yes. sin, Yes. if you're not sure, absolutely, Hallelujah. real down deep inside of you, that you're going to heaven when you die, this moment of time is for you. Yes. This moment right now is your opportunity for you to receive God Amen. through Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Amen. He's calling. Yes. What you feel in your heart right now is what God is saying. Come to me, child. Jesus. Yes. Come, my hand is reached out to you. Yes. The thoughts in your head, that's the devil trying to stop you right now. Jesus. Yes. But greater is he than deep inside than the one that comes against you. Jesus. So I want to pray for you before I close. I want to say to you right now, if you've accepted Jesus today through the Word of God, you've heard the Word of God, and God said signs and wonders will follow the Word of God. Yes. If you, after I pray this prayer for you, have accepted Jesus, would you please send us a text right away? Tell us, I just accepted Jesus. I Yes. just accepted Jesus. Jesus. Jesus is my Lord. Would you Yes. text that right now in Jesus' name? Father, Yes. I pray for those who this moment in Yes. their homes, in their shops, Yes, in their in Jesus' businesses, name. out Yes. under the tree. I Oh, see glory. someone Yes. sitting Glory out under to the tree Lord. Glory watching to us Lord. right now. Glory to Lord. Yes. You accepted Jesus right now. He यीशु has को कबूल accepted करने you. का वक्त है। And he says to ये वक्त है you, निजात you का, ये will वक्त be है with me in तौबा का, paradise. यीशु को कबूल For करने today I वो declare आज ही you a आपके child फरदौस of the में लेकर living जाना God. चाहता है. So Hallelujah. if you have accepted him Glory, glory Please. to Lord. right now, Yes. make a comment, send a text, Yes. make a phone call. Yes. Tell us Jesus is Hallelujah. Lord of your life. Yes. Amen. God Amen. bless you. Amen. 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 Awesome. Very awesome. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Praise and all Jesus. glory to God. Many people and write down and we accept the Christ and great sermon, blessed people, changed life, and all glory to God. इससे पहले नाज़रीन के हम पढ़ें. I just Urdu translate. So just explain to people. Some people Yes. know.
So, book of Luke and chapter 23, verse 43, right? Yes. 42, 43. 42, 43. लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 42 और 43 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत खुदा के खादम ने आज कलाम की बात को शेयर किया कि खुदा आज भी जो है वो फरदौस में, किंगडम में रखना चाहता है। और टुडे मी पर्सनली वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई लर्न मोर थिंग्स. Because say the shepherd, that time on the shepherd area bones, but Jesus born Bethlehem. This is the new things for me, right? So I'm real blessed. मैंने भी इस बात को सीखा है कि वो जगह जहां पर शीप्स पैदा होती थी वहां पर यीशु पैदा हुआ कुर्बानी देने के लिए। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए, और सारा जलाल, सारी इज्जत हम खुदावंद के नाम को देते हैं। जी एस्टर। आए खुदावंद के खादम के लिए, जो खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत कलाम शेयर किया। वर्ड ऑफ यकीनन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। हम इस बात का सारा जलाल, इज्जत, ऑनर यीशु के नाम को देते हैं। और हमें जरूरत इस बात की है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी जिंदगी को गुजारें और कोशिश करें कि गुनाह से दूर रहें और खुदा उनके कलाम के मुताबिक चलते और खुदा उनके कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते रहें, ताकि जलाल के बादशाह को जलाल मिलता चला जाए। और मेरे अजीजों, इसी तरह अब वक्त हुआ जाता है कि हम आपके लिए दुआ करें और आपकी सल्वेशन के लिए दुआ की जाए, आपकी तौबा के लिए। जितने लोग आज तौबा करना चाहते हैं, जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप मेरे अजीजों, खुदा उनके खादम पास्टर रिचर्ड और पास्टर जॉन जो है वो आपके लिए सल्वेशन के लिए भी प्रेयर करेंगे, और प्रेयर फॉर ऑल डिजीजेस, though you are suffering in diseases, they also pray for. So Pastor Richard, before we pray for the sick people, I request you pray for the salvation. Those people want to accept the Jesus Christ, so I want you pray for them. Amen. Hallelujah. If you'll pray just this simple prayer, Father in heaven, I believe that Jesus Christ is your son. मैं ईमान रखता हूँ कि खुदाम यीशु, ईमान रखता हूँ कि खुदाम यीशु मसीह तेरा बेटा है। And I know that if I don't accept him, और मैं जानता हूँ I am going to hell. कि मैं जो हूँ तुझसे दूर हूँ। So today, लेकिन आज I receive Jesus. मैं यीशु को कबूल करता हूँ। I ask this. मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे गुनाहों को मुआफ कर। I believe he is your son. मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, And now he's my savior. और मैं जानता हूँ कि अब वो, मैं जानता हूँ कि अब वो मेरा सेवियर है। Yes. I receive him by faith. मैं ईमान के साथ कबूल करता हूँ, And I declare from this day forward, और आज मैं इस बात का अनाउंस करता हूँ, I am saved. मैं निजात याफ्ता हूँ, I am born again. मैं यीशु मसीह में पैदा हो चुका I हूँ, have hope. मेरा ईमान है And that your Holy Spirit कि तेरा पाक रूह will teach and guide me और मुझे रहनुमाई करेगा, as you prepare me for my destiny और तू मुझे तैयार कर रहा है हमेशा की जिंदगी के Oh लिए, yes. because of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से। Thank you, God. थैंक यू जीसस। I receive Jesus. मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूँ। Amen. आमीन। प्रेज़ जीसस। हालेलुया।
खुदावंद आप Jesus. सबको बहुत बरकत दे। जितने लोगों ने आज यीशु को कबूल किया है वो आफ्टर दैट सम पीपल वॉच द लेटर वीडियोस एंड देन एवरीबॉडी जस्ट सेंड मी द ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज एंड देन आई रिप्लाई टू पास्टर नितिन। Praise God. Praise Jesus. So- Hallelujah. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की खूबसूरत सर्विस के लिए। और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बाइबल टीवी पर अपनी पैगामात भिजवाना चाहते हैं, आप बाइबल टीवी पर गीत भिजवाना चाहते हैं, आप हमारा ईमेल चल रहा है, आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। फोन नंबर भी चल रहा है, आप फोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ 0300 4387 पर भी आप जो है कॉल्स करके अपने गीत भिजवा सकते हैं, अपने सॉन्ग दे सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी चल सके और खुदावंद आपको बरकत दे। जी एस्टर। Praise Jesus. Hallelujah. बड़ी खूबसूरत उन्होंने प्रेयर की। यीशु का शुक्र अदा करते हैं और जितनों ने यीशु को कबूल किया है हम आपको Welcome करते हैं। यीशु मसीह में वेलकम Yes. करते हैं। We welcome all The people who newborn accept the people. Jesus That's Christ. right. Yeah. We welcome. Right, yeah. We welcome all Hallelujah. newborn Christians. So yes. right now we are going. हम Yeah. उन बीमार बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। Those are sick. I want Pastor John, you pray for them. Hallelujah. Jesus. You put your hand on your sickness. Sick. If you Yes. headache, you put your hand on your head. And anywhere you are problem, you put your hands. Praise Amen. Jesus. Hallelujah. Oh, bless you, Lord. Father, I Glory just to thank you Jesus. right now, Lord. Hallelujah. Because, Father, I know that you are in the healing business, Lord. Father, you said those that come in the name of Jesus, whatsoever we ask in reason, Lord. Father, we just thank you for the healing manifestations that you're bringing to your sons and your daughters in this hour, Lord. Father, I know it's not by might, it's not by power, but it's by your spirit, Yes. says the Lord. Now, Lord, you send your angels to camp about your sons and your daughters and your little ones, Lord, for such moments and times as these, Lord. Father, heal them from the top of their head to the middle of their stomach, to the bottom of their feet this morning, Lord. And Father, allow them to rise up and take up that bed, Lord, and begin to walk this morning, Father. And Father, we thank you for your grace and your mercy. We thank you for your honor this morning, Lord. We thank you for the word that has come forth, Lord. Father, take those, Lord, and take them right now. Take them to the river, Lord, and allow them to touch it, Lord, with their feet, hands, or whatever part of their body. And allow them to know, Lord, that that is the river of healing, Lord. And Father, I thank you for that this morning, Lord, as your manifestation go forth for such a time as this. And Father, we honor you for your grace and your mercy, Lord, because of your name, Yes, Jesus. Jesus. And Father, we thank you for that this morning. And Father, we just love you. We glorify Yes, you. Jesus. And we ask all these glorious blessings Oh, yes, that you're Lord. sending forth to Yes, your my sons Lord. Yes, and your my daughters Lord. for such a moment, Yes, a Jesus. special loving Praise, moment as this, Lord. Yes, And I Jesus. thank you for that. Oh, And I honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Father. Thank Praise you. I Jesus. believe, Thank my you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes. यकीनन मेरे अजीजों जितनों के लिए दुआ की है खुदा उनके खादम ने Lord. आप ईमान रखे कि खुदा ने आपको ब्लेस किया है, आपको हील किया है और खुदावन के फजल से आप यीशु मसीह के नाम की गवाही शेयर करेंगे। Yes. सो हम यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि वही इज्जत तमजीद और हम के लायक है। हालेलुया। Lord, सो Lord, हम yes, इस Lord, बात के लिए yes, शुक्रगुजारी Lord. करते हैं जितने Lord, लोग भी हमें Lord, बाइबल टीवी के ऊपर देख रहे हैं Yes. खुदा आप सबको बरकत दे और आपको अपनी पनाह में महफूज रखे क्योंकि वही हमारा हीलर है, वही शाफी है, वही Yes. हमें हाथ पकड़कर हमें सर बुलंद कर देता है। आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि सरफराजी जो है ना मशरक ना मगरब से बल्कि किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। प्रॉस्पेरिटी खुदावंद की तरफ से है। तो मेरे अजीजों आप यकीनन
आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाए, हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आप जरूर मेरे अजीजों, जितनों ने अभी तक बाइबल टीवी को डाउनलोड नहीं किया, आपके पास फोन है, आप अपने एंड्रॉइड और ऐप के अंदर जाएं, आईफोन के अंदर जाएं, एप्पल आपके पास फोन है, आप अपने डाउनलोड करें ऐप्स के अंदर जाकर बाइबल टीवी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बरकत पा सकें। और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि खुदा उनका कलाम फैलता और तरक्की पाता चला जाए। इससे पहले कि हम इजाजत चाहें, मैं चाहती हूँ कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम एक शुक्रगुजारी की छोटी सी दुआ करेंगे। इसके बाद हम थैंक यू करेंगे खुदा उनके खादमों का, और ऐ हमारे बाप के साथ रुखसत होंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदा, Thanksgiving prayer. Yes. मैं तेरा Thank शुक्र you अदा for करती आज की beautiful सारी word मीटिंग of के God, लिए। my Lord. Thank you for ऐ giving पाक को हम people देख, prayer, तू हमारे Lord. साथ रहा, Thanks for तूने एक एक everything, को my बरकत दी, Lord. ब्लेस Thank किया, you, शिफा दी thank पाक you, खुदा, thank you for कलाम your की blessing. वसीला से Thank बरकत you दे। for your love. आज Thank के you for पाक your हम देख मीटिंग का presence, my सारा Lord. जलाल, सारी Thank you, इज्जत, Lord. Thank सारा you, thank ऑनर you, Lord. हम तेरे You पाक say बेटे the यीशु Lord, के नाम को 2 देते and हैं। 3 बाइबल people टीवी I के am साथ there, हो, my Lord. ऐ पाक हम देख यीशु के नाम से I तेरे believe, my खादमों Lord, के you लिए are तेरा there शुक्र and अदा you करते। bless me जितनों and तेरे प्यारों ने bless your सुना आज का people. कलाम, यकीनन बरकत पाए, Amen. और आज की Amen. मीटिंग का सारा जलाल एक दफा Yes, फिर indeed. हम तेरे पाक Lord, बेटे yeah. यीशु के नाम को Yes, देते हैं, Lord. मसीह यीशु के नाम में। आमीन। Amen. खुदावंद की सारी Hallelujah. दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक होता रहे। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक रहे। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So thank you so much, Pastor Richard. Thank you for You that. shared the word of God, and many people blessed today you with your sermon. Thank you Amen. so much, Pastor John. You gave Amen. us your time and shared your all things. So we give all glory to Yes. God. If you want to something, you can share. Be blessed. Amen. Be blessed. Same will be blessed in the name of the Lord. We will be blessed in the name of the Lord. Amen. Amen. अपना ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपको बरकत दे। और आप भी, everybody pray for Pastor Richard, Pastor John, for me and Esther. We need also pray. Amen. And खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का पाक रूह आपकी रात भर दिन भर मदद करे। आप फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। God bless Bible TV. Praise Jesus. Bye-bye. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Wonderful Lord.